Mahayuti. In truth, the leaders of Mahayuti are predators, clawing and ripping apart democracy through defections. Mahayuti leaders have now admitted to political brokerage of toppling the previous MVA government in a meeting where Union Home Minister Amit Shah and a leading industrialist Gautam Adani were present. Is it a coincidence that Adani's company are also now Mumbai's biggest land developers? Under the nose of Mahayuti's leaders, a new gun culture and Gundaraj have spread across Mumbai and the Mumbai metropolitan region. Dreaded gangsters are being given protection, known criminals are actively encouraged, entertainment industry including Bollywood is being issued open threats, and political leaders are being murdered in broad daylight. Can this happen, I ask myself as a citizen of this country, without active or tacit complicity of the Mahayuti leaders? The sharks of Mahayuti, as I call them, are doling out contracts and tenders at a destructive pace. The stench of scams and exploitation remains writ large with scant regard for due process, transparency, accountability, Mumbai's fragile ecology, or environmental sensibilities. The same B company continues to destroy the edifice of industrial revolution in Mumbai and Maharashtra. I will very briefly touch upon some of the badlands of Mahayuti, as I call them, as they have been unleashed onto Mumbai and Maharashtra. The first one is Mumbai mortgaged. It's interesting, and I'll put three facets for you. CBI and ED, they raided GVK in June 2020. In August 2020, GVK sold 74% to Adani. In January 2023, GVK gets clean chit from both CBI and ED. But Adani now owns Mumbai airport. Adani now also owns Mumbai's electricity supply for 120 lakh customers spanning nearly 400 square kilometer area. In September 2024, Adani has bidded and has been awarded 6,600 megawatt of electricity to be supplied to Mumbai and Maharashtra for a period of 25 years up to 2049. So Adani also now owns a large portion of power production. Fourthly, the Adani is now the beneficiary of Maharashtra's biggest land deal, the Dharavi development project. And there are three important facets that I want to bring out before I say a few facts. Dharavi's total area, 641 acres, developable area 429 acres. In the 2018 bid, SecLink had taken the bid successfully for 7,200 crores. The bid was cancelled, and in the 2020 bid, which is now being finalized, Adani is the successful bidder for about 2,200 crore less at 5,069 crores. But what are the issues? The issues are, number one, Adani will get 786 lakh square feet of space to develop. How do I arrive at this figure of 7 crore 86 lakh or 786 lakh square feet? After accounting for 64,000 eligible beneficiaries, the number of units are 1.46 lakhs. Take Dharavi's FSI as 1.33, which is declared. Vital public project notification 35% extra.
So each 300 square feet unit translates into 538.65 square feet. So it comes to total 786 lakh square feet area. B. Adani is also being allocated 990 acres of land in Mumbai. Project area 429 acres, 21.25 acres of Kurla Dairy land, 140 acres of Mud Island land, 255 acres now famously of the central government largesse salt pan land, and 125 acre of Dionar dumping ground. That makes it 990 acre. Thirdly, every builder in Mumbai now has to compulsorily buy TDR, transfer development rights, from Adani. In November 2023, as we all know, a controversial notification came in making it mandatory for every builder of Mumbai to buy 40% TDR from Dharavi development project. That is only Adani. So, what are we saying effectively? That this means that any builder working on any project in Mumbai is now dependent upon Adani. So, this hands over the entire development leverage of Mumbai to one company, that is Adani. And the defense being put up when you ask these questions, why 786 lakh square feet of developing space to Adani? Why 900 acres of land to Adani? Why TDR rights to be bought only from Adani across Mumbai? The answer is, a fresh survey, Mashal survey, is no longer sufficient, the original survey, and now a fresh survey is being done. So I ask as a citizen, if a fresh survey is being done, then how is it that a tender can be allocated when you don't know the number of eligible beneficiaries? When you do not know the area to be constructed or allotted or land required, when you don't know what is the cost of the project either to the state or to the developer, then how have you allocated the tender? So there is a dichotomy, and that's why I call it Mumbai mortgaged. And this is the Mahayuti is doing. The second facet, my friends, is Mahayuti's Gundaraj and Gundaraj. Mumbai and MMR, Mumbai Metropolitan Region, they have become the badlands of crime under Mahayuti, under Shinde, under Ajit Pawar, under Devendra Fadnavis. Among India's big cities, I'm sure you know, Mumbai is highest in crime, with 4,897 violent crimes reported in a year, or 14 crimes a day. The instances and the trail reveal a shocking pattern of complicity, collusion of the Mahayuti leaders with the gangsters and criminals. And I like to cite some. Just like the D Company days, Bollywood and its prominent entertainers are now being openly issued threats. Shots are being fired at their residences bang in the middle of Mumbai by the Lawrence Bishnoi gang. And Mr. Lawrence Bishnoi, the dreaded gangster, continues to be lodged in the high security Sabarmati jail in Gujarat, with Mumbai police not being permitted to interrogate him. What should I call it? Complicity, collusion, or coincidence? You to judge. Secondly, in the broad daylight, we saw the assassination of former minister, senior leader, who was also once, for a long time of his life, associated with the Congress party, Baba Siddique, which shocked the entire country and exposed a nexus of the Gun and Gundaraj to Mahayuti. Thirdly,
We saw how Abhishek Gosalkar, a former corporator in the Greater Mumbai Municipal Corporation, he was shot dead on live Facebook. I don't remember anywhere in India where a live Facebook murder has taken place recently. Does it not show complicity of the gun and Gundaraj? Fourthly, Ganpat Gaikwad, the BJP MLA from Kalyan East Assembly, he shot Mahesh Gaikwad, the Shinde Sena chief of Kalyan, in Ulhasnagar police station. That is one crime. So now people are shooting each other, not outside where police can't reach, but in the premises of the police station. But the second part is more shocking. For Ganpat Gaikwad openly said that the man responsible is Eknath Shinde, the current chief minister. Ganpat Gaikwad also publicly said that in the entire Thane region, Eknath Shinde, despite being chief minister, runs and gives protection to gangs and goons and known criminals. And he said he has filed a written complaint in this regard to Devendra Fadnavis, who was the home minister. But BJP has now proceeded to give tickets to Ganpat Gaikwad's wife to fight, for Ganpat is in jail. This only proves that BJP also accepts the assertions. Then why no case against Mr. Eknath Shinde and his son? Why was no FIR lodged against the chief minister? Does it not show active protection of the gun raj and the Gunda culture? Next, we saw how photographs emerged of known history cheater and criminal Hemant Dabekar, right? That's how you pronounce it. At Chief Minister's official residence at Malabar Hills. I asked today, what is the dreaded criminal Hemant Dabekar's connection to Eknath Shinde? Is it not a security failure of the Mumbai police and security of CM that they permitted him to come to the residence of the chief minister? Or he is connected to Eknath Shinde, that's why he came. The answers have to come. Next, photographs also showed Eknath Shinde in close proximity with the gangster, kidnapper, extortionist Nilesh Ghewal. Am I pronouncing that correct? Well, somebody could have got a picture clicked, so we dismissed it. But then, leader of opposition Vijay Wadattiwar, he produced another video where the same gangster, extortionist, kidnapper is making reels where? In Mantralayar. Now if gangsters, kidnappers and extortionists are going to make reels to put on Instagram in Mantralayar, does it not show complicity or connection of these gangsters with the Mahayuti government? In another instance, a non-gangster and criminal from Pimpri Chinchinwad in Pune, Mohammad Iqbal Sheikh, also known as Asif Dadi, he was seen at the residence of Deputy Chief Minister Ajit Pawar. I asked today, what is Asif Dadi's connection to Ajit Pawar? What was he doing at the residence of Deputy Chief Minister? And if gangsters will be found at the residence of Deputy CM, who will protect law and order? No answer comes. We also saw and we were shocked when Deputy Chief Minister Ajit Pawar's son Rohit Parth Pawar went to the house of dreaded criminal Gaja Marane in Pune, and he was accepting flowers and other felicitations from him. Now if Deputy Chief Minister and his children actively protect the criminals in this fashion, then who will protect citizens of Maharashtra? And last but not the least, now even journalists are not spared. Nikhil Wagle, activists
Vishambar Chaudhary, Asim Sarode, they were openly attacked by BJP and Ajit Pawar's men after an open threat was issued by the Pune city president of BJP, Dheeraj Ghate. Is this that's why I call them the B company. Once upon a time, Mumbai used to be scared of the D company, but now it is scared of the B company. For these 10 instances symbolize a malady, a stench of crime that has seeped into the ruling elite of Mahayuti in Maharashtra and Mumbai. Tenders and contracts of them is going to lead to a 35-year long imposition of toll in the MMR region starting year 2029 and going up to year 2064. I will explain why. Without bothering for toll imposition for such long periods in future in the MMR region, Eknath Shinde has been awarding contracts and tenders at a breakneck speed without following due procedures. So I will come to each one. MEP infrastructure. Maheskar, right? That's the owner. Jayant Maheskar. Collects tolls, his company collects tolls at the 5 entry points as also at the ceiling. The company in March 2024 goes into bankruptcy, goes to NCLT. Now the impact of toll cancellation and compensation that would be paid by Maharashtra government to whom? To MEP infrastructure has not been disclosed. How much will that compensation will be? Will it be 1,000 crore a year? Will it be 1,500 crores a year? Will it be 900 crore rupees a year? Is it also saving MEP from his NCLT troubles forever? For they will get money now without any service. No toll, no service. So if you give me also 1,000 crores, I'll be a very happy man without doing anything. So MEP is now, infrastructure is going to get that money. And is Prime Minister Modi going to share that compensation to be paid to MEP by Maharashtra government? And how much is that money? We will like to know. People of Mumbai will like to know, for after all, you are the ones who are going to pay that money. If not from here, one and the same thing. Secondly, is it not correct that MMRDA has taken a 30,000 crore loan from Power Finance Corporation on interest, on which Maharashtra has to pay interest as also pay back the principal? To do what? To finance recently awarded tenders and contracts, including the 21,000 crore Thane Borivali Twin Tunnel Road project, which costs 21,000 crores. And this has been awarded to Mega Engineering in 2023. Is it not the same Mega Engineering that donated 966 crores by way of electoral bonds to BJP and which has been under ED scanner? Thirdly, is it correct that the MMRDA will now start collecting tolls starting the year 2029 in the MMR region for a period of 35 years up to the year 2064 to repay this 30,000 crore and interest of loan taken by MMRDA? So how are we in Mumbai and MMR benefiting is a question that I ask myself. And how many tenders and contracts have been awarded by Mr. Eknath Shinde and his government in last 1 year, particularly in last 6 months? So on one side you say removal of tolls, on the other side you are imposing tolls up to 2064 to pay back this 30,000 crore. So which one is correct? Are you removing tolls, or are you going to impose tolls between 2029 and 2064? And Mahayuti means Maha Mengai. I made a chart for you, I won't bother you.
as to how Mahayuti is taking from every household of 4 1 lakh rupees while only giving 18,000 back. So I am not going to bother you. We'll send you my colleagues will send you the press release. And so we made a full chart as to how Mahayuti means Mahamehungai. So time has come to vote out the lies, the deceit and the deception of Mahayuti. Any questions, you are welcome to ask. We'll send you, of course, a Marathi, a Hindi and an English press release. Questions? Sir. 900 crore. Yeah, I mean, sir, I know, I also read that it is 900 crores. But as you know, tolls increase every 1st April. You and me are both aware. No, I'm aware that it was 900, but finally it will be how much? Is a question I ask of myself. For the toll agreement says that every 1st April you increase rates, and if the certain costs go up, then you further increase rates. So what is that impact that will come? It may be 900 crore today, it will be 990 crore next year, and it will be 1050 or 1080 crore next year. We want like to know. Even more than what you have disclosed. But I find your Mumbai Congress is very weak, is not aggressive. They have not taken up these issues to the state. Your neighbor sitting next to you, ask him now what he has done. Sapra. Mumbai Congress is least bothered about this issue. They started this Adani issue right after the elections were declared, not before that. This Adani is going on for last so many years. Your party has woken up just now. I always say that better late than never. And I am sure that we will use the good offices of prominent journalists, including your good self, to highlight some of these issues as the state goes to polls. There is always scope for correction. There is always scope for course correction and introspection, and I concede that. But I also say that with 2 days more of active campaigning left and some 1 day of silence period, I am certain that Mumbaikars and people living in the MMR will consider some of these issues, for they don't belong to Congress, they belong to lives of people of Mumbai and MMR. And I am sure that active help from journalists of media and print like you will enable us to carry these issues forward. Sir, we are already seeing that how there are corruption charges against Mahayuti that the Mahavikas Aghadi is putting up. Now, since Maharashtra election will get close, there will be upcoming elections in Delhi. Kailash Gehlot has resigned, citing corruption charges on his own party. उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शीश महल जैसे कई घोटाले हुए हैं, यमुना के कई घोटाले हुए हैं, उसकी वजह से वो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं, और यही हाल अन्य राज्यों में भी है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों का जिक्र किया है. कैसे देखते हैं? देखिए, किसी व्यक्ति ने अपनी पार्टी से इस्तीफा दिया है, वो कांग्रेस का हिस्सा तो है नहीं, और ना ही कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से दिल्ली में कोई समझौता है, अलायंस है. तो ये उनकी पार्टी का मामला है. जहाँ तक दिल्ली में 2 व्यक्तियों की लड़ाई में और 2 पार्टियों की लड़ाई में दिल्ली के लोग पिस रहे हैं, ये सच है. आज दिल्ली एक गैस चेम्बर है जहाँ 20 सिगरेट हर रोज, हर वो व्यक्ति जिसने कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया वो पीने पर मजबूर है. और मैं तो समझता था कि मुंबई बेहतर होगी, पर मुंबई में भी आसमान में कोई तारा नज़र नहीं आता, चारों तरफ एक स्मॉग और हेज नज़र आता है. ये कभी मुंबई में इतने वर्ष में, पिछले 40 साल से मैं मुंबई आता हूँ, मैंने कभी मुंबई में इस प्रकार का पोल्यूशन नहीं देखा. तो मुझे लगता है इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, अब जितने ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं वो, इन सब में CRZ का वायलेशन है.
तो इसलिए गहलोत साहब उनकी पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं या पार्टी वो छोड़ रहे हैं, ये उनका निर्णय हो सकता है। मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कांग्रेस जो है अपने बलबूते पर दिल्ली में न्याय यात्रा चला रही है और सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रही है। सर, एक सवाल ये है महाविकास अघाड़ी के लिए। महाविकास अघाड़ी कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सभी की पार्टी है, सभी धर्मों सभी जातों की पार्टी है। मौलाना नुमानी जैसे लोग आ जाते हैं या कई एनजीओज आ जाते हैं जो माइनॉरिटी का पक्ष सिर्फ और सिर्फ महाविकास अघाड़ी के साथ रहेगा ऐसा स्टैंड लेते हैं। वहीं आपके ऊपर इल्जाम लगता है कि आप माइनॉरिटीज को प्रिविलेज दे रहे हैं और हिंदुत्ववादी अगेन कॉन्सेप्ट जो है वो इस इलेक्शन में भी खड़ा हो चुका है। तो आखिर महाराष्ट्र में जमीनी मुद्दे न होकर धार्मिक मुद्दे एजेंडा क्यों बने हैं चुनाव के पहले? इसलिए कि बीजेपी किसान की बात नहीं करना चाहती। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा देश में सोयाबीन की खेती करता है। 50 लाख हेक्टेयर में, 1,25,97,000 एकड़ में। अनबिलीवेबल, सबसे ज्यादा। आप 73 लाख टन सोयाबीन पैदा करेंगे। पर मोदी सरकार और जो मौजूदा महायुति की सरकार है, उन्होंने एक महीने में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कितना सोयाबीन एमएसपी पर खरीदा? 73 लाख टन की पैदावार है। 4,000 टन चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए इनको। 4,892 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी है सोयाबीन का। किसान को मिल रहा है 3,000, यानी प्रति क्विंटल 1,892 रुपया प्रति क्विंटल का नुकसान किसान को है। अगर 1 एकड़ में 10 क्विंटल भी सोयाबीन पैदा हो तो किसान को जो नुकसान हो रहा है वो 24,000 करोड़ का है। पर बीजेपी इसकी बात नहीं करेगी। वो ये भी नहीं बताएंगे कि सोयाबीन तेल का खेल बीजेपी कैसे करती है। इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर सोयाबीन आने से पहले 17.5% से 15.5% कर दी। जो क्रूड सोयाबीन ऑयल है उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है, केवल 5.5% के सेसेस हैं। इसीलिए 2013-14 में जब कांग्रेस की सरकार थी, इस देश में 8,000 करोड़ सोयाबीन के क्रूड ऑयल का इंपोर्ट होता था, 47,000 करोड़ का होता है। क्यों? और एक बड़ी शॉकिंग बात मैं आपको और बताता हूं। महायुति की सरकार ने मोदी जी को लिखकर दिया कि महाराष्ट्र में सोयाबीन की लागत है किसान को 6,095 रुपया प्रति क्विंटल। मोदी जी रेट फिक्स करते हैं 4,892 रुपया प्रति क्विंटल, बिकता है 3,000 रुपया प्रति क्विंटल। तो अगर 6,092 लागत है, मैं एकनाथ शिंदे की बात मान लूं, तो 50,000 करोड़ का नुकसान सोयाबीन किसान को हो रहा है। तो वो मराठवाड़ा हो, वो विदर्भ हो, किसान आज बर्बादी की कगार पर है, मजदूर बर्बादी की कगार पर है। ये बात कभी देवेंद्र फडणवीस नहीं करेंगे, एकनाथ शिंदे नहीं करेंगे, अजीत पवार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो कभी आपको ये चार्ट नहीं दिखाएंगे कि वो 1 लाख रुपया की वसूली करते हैं और 1,500 रुपया वो भी चुनाव से ठीक पहले 18,000 रुपया साल का देकर कहते हैं ताली बजाओ। वो ये कभी नहीं बताएंगे कि उन्होंने मुंबई को क्राइम कैपिटल बना दिया है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। वो किसी मौलाना की चर्चा करेंगे। और वो मौलाना भी क्या कह रहे हैं, वो भी बड़े अजीब। इस देश में हर व्यक्ति को अधिकार है किसी को वोट देने का। कोई व्यक्ति किसी को वोट देने से रोकता है तो ये क्राइम है, अपराध है। आप एफआईआर दर्ज करिए, कार्रवाई करिए, क्यों नहीं? मुझे भी अख्तियार है, आपको भी अख्तियार है, किसी को भी वोट दे। धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं डाली जा सकती। इस प्रदेश के मुद्दों के ऊपर वोट डाली जाए। यहां पीएचडी जो है वो चपड़ासी लगने की लाइन में खड़े हैं बच्चे, उनमें भी तो बहुत सारे मेजॉरिटी हिंदू हैं, कुछ मुसलमान भी होंगे, कुछ सिख भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहां के मुद्दे जो हैं उन पर एक गाली नवीस साहब हैं, उनका नाम फडणवीस है पर मैंने उनका नाम बदलकर गाली नवीस रख दिया है, क्योंकि वो सिर्फ गालियां ही देते हैं आजकल। एक समय में अच्छे आदमी थे, मुझे नहीं पता क्या हो गया।
तो उनका नाम है देवेंद्र गाली नवीस। गाली नवीस। सर मेरा एक सवाल उन्हें अभी भी उन्हें अभी भी राय देता हूं मैं, उनको जरूर दीजिएगा अशोक जी को दोबारा ना फंसा दे, क्योंकि आजकल वो गलत कंपनी में है। मैम सर मेरा ये सवाल है कि आज बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि है, तो शिवसेना शिंदे ग्रुप ने एक विज्ञापन छापा है। उस विज्ञापन में लिखा है उन्होंने कि बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि मैं अपनी पार्टी को कभी कांग्रेस नहीं होने दूंगा। तो पुण्यतिथि के दिन आप पर भी टिप्पणी की है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने जैसा कहा, टोलनाथ शिंदे बनाम एकनाथ शिंदे, एलियस एकनाथ शिंदे कभी भी सार्थक मुद्दों की बात नहीं करेंगे। बाला साहब जी का अपना एक रोल, कंट्रीब्यूशन, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व था, उसके लिए वो हमेशा याद रहेंगे, लोगों के जहन में रहेंगे। और परंतु अब होड़ क्या लगी है? होड़ लगी है किसी प्रकार से राजनीतिक रोटियां बटोरने की। वो लोग जो बाला साहब के नाम पर चुनकर आए, हमारी पार्टी से तो वो नहीं है, मैं मानता हूं, पर वो बाला साहब के नाम पर चुन के आए, वो उद्धव ठाकरे जी के नाम पर चुन के आए, उनकी कस्में उठाकर चुनकर आए। हमें खुशी है कि ऑटो ड्राइवर से मुख्यमंत्री तक का सफर भी तय कर लिया, खुशी है कि हजारों करोड़ रुपए के मालिक भी बन गए, पर उसके बाद उस विचारधारा को, उस सोच को, सबसे पहले उसकी हत्या किसने की? उसको मंडी में बोली लगाकर खोखों में बेचा किसने? उसी पार्टी ने जो उन खोखों से वो इश्तेहार दे रही है। सर एक सवाल होगा। आदरणीय साथी, मैंने उनका बयान तो नहीं देखा, पर मुझे लगता है कि उन्हें दोबारा से संविधान को पढ़ने की जरूरत है। इस देश के संविधान पर मुझे लगता है उनका इशारा मोदी जी की तरफ होगा। वो गलती से कांग्रेस का नाम ले गए, क्योंकि इस देश के संविधान पर हमला कौन बोल रहा है और वो हमला है क्या? संविधान जो है वो एक जड़ कागज नहीं, वो एक एवोल्यूशनरी जिंदा चीज है जो हमारे मन और आत्मा के अंदर जीती है। लोगों के मौलिक अधिकार छीन लेना सरकार के द्वारा, संविधान निर्मित जो अधिकार हैं दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों के, वो छीन लेना, ये बीजेपी के डीएनए का हिस्सा है। दुर्भाग्य से वो भी उसी पार्टी में है। अब वो अपनी पार्टी के बारे में तो कैसे कहें? तो इसलिए वो इस प्रकार की बातें शायद कह रहे होंगे। मणिपुर में बहुत पहले बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी को वहां स्वयं जाना चाहिए था, जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से देश की सरकार मणिपुर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानती, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम अब जब मुख्यमंत्री तक का घर जलाने की नौबत आ गई है, तो अब तो सरकार वहां राष्ट्रपति शासन लगाएगी। सर मेरा सवाल होगा कि इस दफा जो चुनाव हो रहे हैं वो काफी दिलचस्प नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप दो फ्रंट पर जो चुनावी जंग है वो लड़ते नजर आ रहे हैं। एक आप महायुति से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी विद इन अलायंस पार्टनर्स और विद इन पार्टी हो रहा है। ताजा मामला तब सामने आता है जब आपके एक सीनियर लीडर नितिन राउत बयान देते हैं, क्योंकि वो विलास राव देशमुख को जय भीम कह के ग्रीट करते थे, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इस बयान को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि बीजेपी आप पर लगातार आरोप लगा रही है कि आप जातिवादी पॉलिटिक्स करते हैं? देखिए, अगर गरीब की बात उठाना जातिवादी राजनीति है तो हम ये बार बार करेंगे। अगर इस देश के दलित, पिछड़ों, गरीबों, युवाओं और महिलाओं की आवाज बनना जातिवादी राजनीति है तो हम ये अवश्य करेंगे। अगर बापू, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, उनके पद चिन्हों पर चलना जातिवादी राजनीति है तो मैं इसे कर कर अपने आप को
फक्र मानता हूं, गर्व मानता हूं, पर सच ये है कि गरीब को इंसाफ देना जातिवादी राजनीति नहीं। दलित, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, आदिवासियों को की बात को उठाना जातिवादी राजनीति नहीं। ये भारत के संविधान में निर्धारित सरकार के कर्तव्यों का हिस्सा है और उस कर्तव्य परायणता की कसौटी पर हर सरकार और हुक्मरान को खरा उतारना है। आज के हुक्मरान दुर्भाग्य से संविधान को भी अपने पांव तले कुचलने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं और उन मर्यादाओं को भी वो रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं जो समय समय पर इस देश को रास्ता दिखाती आई हैं। पर ये समय है, लोग समझ चुके हैं, ये समय बदलेगा, जैसा संसद के चुनाव में महाराष्ट्र ने कर दिखाया था। सर, महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो नितिन राउत को इंसाफ मिलेगा, उन्हें कैबिनेट में जगह मिलेगी? नितिन राउत जो हैं वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारी पिछली सरकार में भी तो वो थे, कितने सीनियर मिनिस्टर थे, तो बहुत वरिष्ठ मिनिस्टर थे। उनके साथ नाइंसाफी का प्रश्न ही नहीं। उन्होंने पूरे देश में हमारे एससी डिपार्टमेंट, अनुसूचित जाति विभाग जो है, वो उस कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, तो इसलिए उनसे नाइंसाफी का प्रश्न ही नहीं। तुम्हाला विचारायचं आहे? शेवटचा प्रश्न आहे. कैन वी वाइंड अप? नड्डा साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं पर उनकी जनरल नॉलेज बड़ी खराब है। अब साहब, मैं तो उनसे इतना छोटा हूं, उनके बेटे समान हूं, पढ़ा तो नहीं सकता, पर फिर भी आपके माध्यम से उनको सादर कुछ बात बताना चाहूंगा उनके ज्ञान के लिए। कसाब को कांग्रेस ने फांसी लगाया था, फांसी पर टांग दिया था हमने। दूसरा, हमने तो उन सबको उग्रवादियों को पकड़कर सजा दी थी। हम वो पार्टी नहीं हैं। नड्डा जी की पार्टी में जब नड्डा जी खुद थे, उस समय जो आईएसआई पाकिस्तान से उग्रवाद का निर्यात हिंदुस्तान में करती है, तो याद करिए पठानकोट एयरबेस पे हमला किया था, हमारे आदमी मारे गए थे, फौजी मारे गए थे, और उसके बाद उसी आईएसआई को लाल कालीन बिछाकर नड्डा साहब, नरेंद्र मोदी जी और उसके साथ साथ अमित शाह जी लेकर आए थे। और नड्डा साहब, एक बात और याद रखिए, हम मोदी जी की तरह पाकिस्तान बगैर बिन बुलाए मेहमान के तौर पर बिरयानी खाने नहीं गए। वो मोदी जी हैं जो गए थे बगैर बुलाए मेहमान के तौर पर पाकिस्तान बिरयानी, और बाद में उरी हुआ, बाद में पठानकोट हुआ और हमारे सैनिकों को जान देनी पड़ी। इसलिए हमने दो प्रधानमंत्रियों को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उग्रवाद की ड्योढ़ी पर बलि चढ़ाया है इस देश को एक रखने के लिए। इसलिए हमें ज्ञान मत दें। सुनील बोला. Sir, as you said that Mr. Adani is grabbing Mumbai and Maharashtra land, what will be your stand after your government or your party comes to power? MVA has clearly said that the Dharavi development project allocation to Adani has to be reviewed and cancelled. What about the Adani Power and other projects? I am certain that they will look at every single project, will be examined on its own merits without fear or favor. Wherever there is irregularity, all such tenders and contracts will be cancelled, FIRs will be lodged, and those guilty will have to go to jail. Last question. देखिए, वो खाली कुर्सियां ही उनकी छटपटाहट और घबराहट का कारण है, और इसीलिए वो ये कह रहे हैं। मैं केवल आज उनको भी बहुत हाथ जोड़कर
और महाराष्ट्र के लोगों को भी कहूंगा, जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, ये समझ लीजिए। अब ऐसा है, वहां नूरा कुश्ती चलती है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। दे वॉन्ट टू मीन एवरीथिंग टू एवरीबडी, दैट यू कैन नेवर बी। असली में तो वो आपस में ही काट और बाढ़ रहे हैं, जैसे हरियाणा में कहते हैं। थैंक यू very much, Surjewala sir and all.